Hello, my dear students. This is your Pritam sir once again, and you are watching Pritam's English Mantra. Let's fall in love with English. ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ମଙ୍କିସ୍ ପ ତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମଙ୍କିସ୍ ପର ଅପ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ସେତକ ଯାଇ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ ତାଙ୍କର ରିମେନିଂ ଦୁଇଟି ୱିଶ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଶ୍ଡ ଫର୍ 200 ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତ ସେଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ to the White's family was terrible sucking. ताको first wish रो जो result the way it was fulfilled तो it was terrible sucking. The following day after Hubbard had left for work ता परदिन Hubbard work को गला परे a representative from Moe and Meggins came with a sucking news that their son was caught in the machine. His body was mangled. The stranger further added that the company wanted to convey their sincere sympathy for the great loss of the Whites and said that considering their son's work, the company would give them a sum of 200 pounds as compensation. That means जेतेबेले हबर्ट ऑफिस को बाहरी गला तार किछि समय परे किछि घंटा परे से जो फैक्ट्री रे काम करे मो एंड मेगिन्स रु जने एम्प्लॉई तो तांको घर को आसिला गोटे सैड न्यूज को नहीं जे से सैड न्यूजटा कौन ना माने हबर्ट्स बॉडी वाज मैंगल्ड इन द मशीन व्हाइल वर्किंग तो काम करथुवा समय हबर्ट रो बॉडीटा मशीन द्वारा माने ग्राइंडिंग हो जाइछि मैंगल हो जाइछि एवं आउरी मध्य कहिला द स्ट्रेंजर फर्दर एडेड दैट द स्ट्रेंजर आउरी थरे मध्य कहिला जे जेहेतु हबर्ट जने सिंसियर जड़े डिवोटेड डेडिकेटेड एम्प्लॉई थिला तेणु कंपनी तरफरु तार गोटे सिंपाथी पाई गोटे टू कन्वे सिंसियर सिंपाथी फॉर द ग्रेट लॉस ऑफ द व्हाइट्स तो सेमानक तांग तरफरु 200 पाउंड्स रो गोटे एश्योरेंस सम गोटे कंपेंसेशन सम दवा पई रेडी अछंती। हियरिंग दिस मिसेस व्हाइट स्क्रीम्ड इन शॉक। एक कथा सुनला परे मिसेस व्हाइट माने शॉक रे स्क्रीम चित्कार करिया लागिले एंड मिस्टर व्हाइट फेंटेड। मिस्टर व्हाइट माने सेंसलेस हे गले। एबे बुझिबा व्हाट डिड मिस्टर व्हाइट डू टू द पॉ आफ्टर गेटिंग हिज फर्स्ट विश ग्रांटेड। प्रथम विश ग्रांट हवा परे मिस्टर व्हाइट प्रथम विश को टाइप रो ग्रांट हैला हम टिके पूर्व बुझी गले तो ई फर्स्ट विश ता तांकर ग्रांट हैला परे से पॉ को मिस्टर व्हाइट कोन कले ना द इंपैक्ट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ मिस्टर व्हाइट्स फर्स्ट विश ऑन द कपल वाज टेरिबल सकिंग नो इट तार जो टाइप रो इंपैक्ट पड़िला एटा तो ऑब्वियसली टेरिबल सकिंग दो दे गॉट व्हाट दे रियली वांटेड येट दे पेड अ ह्यूज कॉस्ट टू गेट दैट। जदियो से माने जहां भी चाहितले पाई गले से माने चाहितले 200 पाउंड्स एंड ऑब्वियसली दे गॉट 200 पाउंड्स बट फॉर 200 पाउंड्स फॉर दैट 200 पाउंड्स दे पेड अ ह्यूज कॉस्ट टू गेट दैट द लाइफ ऑफ देयर सन आई मीन ओनली सन हबर्ट। The couple were in a state of deafening anguish तो obviously जनकर गोटिए पुओ गोटे कपल तकर गोटिए पुओ तो मरी जाउची तो obviously तो they were in a state of deafening anguish. Mrs. White could not endure the loss and was almost mad. Mrs. White तो almost mad ही जाइथिला and Mr. White knew that their son died only because of their wish on the monkey's paw एवं एक कथा मिस्टर व्हाइट रियलाइज करथिले जे केवल से मंकीस पर विश करबा जोगु ही तांको सन रो डेथ हेतिला। रियलाइजिंग इट्स वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट ही केप्ट द पॉ अपस्टेयर्स तेनु एरो डेंजरस इफेक्ट को रियलाइज करी से पॉटा को अपस्टेयर ऊपर रखथिले। एबे बुझिबा तांकर सेकंड विश विषय कार द व्हाइट्स करो माने व्हाइट्स को फैमिली रो सेकंड विश कोन थिला ना 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ हबर्ट मिसेस व्हाइट वाज वीपिंग मोर्निंग द डेथ ऑफ हर ओनली सन स्टैंडिंग इन द डोरवे। आ भीतर 10 days पास करी जाइथिला हबर्ट रो डेथ रो 10 days पास करी जाइथिला एंड मिसेस व्हाइट हबर्ट को झुरी झुरी कांदुथिला कोठी ना स्टैंडिंग इन द डोरवे माने डोरवे पाखरे ठिया हे। मिस्टर व्हाइट केम टू टेक हर टू बेड से समय मिस्टर व्हाइट ताको माने मिसेस व्हाइट को बेड को नवा पई आसिले सी आस्क्ड द वेयर अबाउट्स ऑफ द पॉ एवं ठीक एई समय रे मिसेस व्हाइट पछाइले जे पॉटा तमे कोठ रखिछो। मिस्टर व्हाइट सेड दैट ही हैड नॉट गॉट रिड ऑफ इट एंड इट वाज स्टिल देयर विथ हिम कहले नाही से पॉटा को तो मो अक्वाड पकई परिबिनी किछि करबिनी तथापि हम से पॉटा एते हमर क्षति कला परे भी मु ए पॉटा को रखिछि मो पाखरे आई मीन अपस्टेयर रे मु रखिछि। She told her husband that they had made only one wish
and the rest of the two wishes were still to be made. तो मिसेस व्हाइट एटी रिमाइंडेड करदेले मिस्टर व्हाइट को जे सेमाने मात्र गोटिए विश करिसेंती एवं तांकर आउ दुईटी विश बाकी अछि सेमाने से पद आउ दुईटी विश मध्ये करि परिबे. सो सी वांटेड हर हस्बैंड टू विश फॉर द रिटर्न ऑफ हर डेड सन हर्बर्ट. तेणु तांको सेकेंड विश रे से चाहुतिले तांको हस्बैंड एई विशटा करंतु जे कोन विश फॉर द रिटर्न ऑफ हर डेड सन हर्बर्ट. But Mr. White was unwilling to do that because he was scared and sure that if he wished their son to be alive again, they would get him in that crossed form, which would be even more terrible shocking. किंतु Mr. White was unwilling to do that. Mr. White ए प्रकार wish टाकू करिया पई चाहु नथिले काहेकि ना he was scared and sure that कारण से शॉर्ट थिले एवं डरी जाइथिले माने डरू थिले एथि पई डरू थिले कोन ना इफ ही विश देयर सन टू बी अलाइव अगेन जदी तांको पुओ को से अगेन अलाइव करिया पई विश करिवे देन they would get him in that crossed form. तांको पुओ तो आसीबो हेले तांको जेहेता बॉडीटा पूरा संपूर्ण भाबरे कोन ग्राइंडेड हे जाइतिला से क्रॉस्ड फॉर्म रे से आसीबो तो which would be even more terrible shocking. तो जोडा को देखिबा बा बियर करिबा टॉलरेट करिबा टेरिबल शॉकिंग. Why didn't Mr. White want to make the second wish? तो Mr. White कहीं की second wish करिया पाइन चाहिए नहीं. Due to an unpleasant result of their first wish, the Whites lost their only son Hobart, जोड़ा मैं आगुरु जानी सरी चे. Mrs. White couldn't forget her son, so they were devastated at the loss. I mean Mr. White, Mrs. White, तो ये loss में पूरा devastated है ये completely devastated. But when Mrs. White wanted her son alive as the second wish, Mr. White opposed doing it. Mr. White को oppose कले. He was horrified that if he wished their son to be alive again, they would get him in that crossed form. जोरा मुटी के पूर्व कहली, which would be even more terrible shocking. जोरा कि आहुरी shocking हबो. She told her that Hobart was so badly crossed that she could only recognize him only by his clothes, and it would be terrible for her to see him in that ghastly form. So he did not want to make the second wish. तेणु से second wish एथि पई करिया पई चाहु नथिले कारण जदि से second wish करिवे तले Hobart सेही फॉर्म रे आसीबो सेही बैडली क्रॉस्ड फॉर्म रे आसीबो जो बैडली क्रॉस्ड फॉर्म रे से मशीन द्वारा क्रॉस हेतिला सेही फॉर्म रे आसीबो. सो सी कुड ओनली रिकॉग्नाइज हिम ओनली बाय माने बाय हिज क्लॉथेस ताको फेस तो नथिबो तो जहाँ भी चिन्हि परिबे केवल क्लॉथेस द्वारा चिन्हि परिबे एंड इट वुड बी टेरिबल फॉर हर टू सी हिम इन दैट घास्टली फॉर्म. सो ही डिड नॉट वांट टू मेक द सेकंड विश. ब्रिंग हिम बैक. डू यू थिंक आई वुड फियर माय ओन सन? व्हाई डज मिसेस व्हाइट से सो? एक कथा सुनला परे मिसेस व्हाइट कहले जे ब्रिंग हिम बैक मो पुओ को फेरै आनो. डू यू थिंक आई वुड फियर माय ओन सन? तुम कोन भाबुछ मो पुओ को डरिबी तो पुओर ए जो क्रॉस फॉर्म को देखि मु डरिबी? तो एक कथा मिसेस व्हाइट काहेकी कहले कौन पई कहले ना मिसेस व्हाइट वाज पैनिक स्ट्रिकन because of the loss of her only son. तो because मिसेस व्हाइट तो पैनिक स्ट्रिकन हो जाइथिले तांका सन रो डेथ जोगु. She was ignorant to the fact that Herbert was so badly crossed in machinery that he could be only recognized by his clothes. किंतु तांकर जो मदरली अफेक्शन एते हबर्ट पटे थिला जे से एनी हाउ हबर्ट को रिटर्न करिया पई चाहुतले हेले एक कथा भूली जाइथिले जे हबर्ट वाज सो बैडली क्रॉस्ड इन द मशीनरी दैट ही कुड बी ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज क्लॉथेस. Besides, it had already been 10 days so it was more terrible to see him in that ghastly condition. तो आ भितर 10 दिन बीत जाइथिला तेणु 10 days परे गोटे डिकम्पोज्ड बॉडी जति उठिकी आसीबो माने ग्रेव रु उठिकी आसीबो तो ताको बियर करिबा से घास्टली कंडीशन को देखिबा बहुत कष्ट. बट मिसेस व्हाइट वाज इग्नोरेंट टू दिस फैक्ट. मिसेस व्हाइट मदरली एंजाइटी एंड अफेक्शन फॉर हर सन हबर्ट gave her the idea for the second wish on the monkey's paw. So she uttered these lines under extreme emotion. तो एथि से जो second wish पाई जो तांको बाध्य कले मिस्टर व्हाइट को under extreme emotion. एबे जिबा फाइनल विश कोन थिला? इवन आफ्टर मच डिनाइल तमे जानि गले सेकेंड विश ता तो कोन थिला मे जानि गले जे सेकेंड विश रे मिस्टर व्हाइट बहुत बाध्यबाधकता रे विश करथिले जे हबर्ट को पुनि थरे फेरी ता जीवन फेरी पाइबा पाई. एबे फाइनल विश ता कोन थिला जिबा? इवन आफ्टर मच डिनाइल फाइनली मिस्टर व्हाइट वाज परसुएडेड बाय हिज वाइफ टू विश टू ब्रिंग देयर सन बैक. एवं बहुत मना कला परे भी फाइनली मिसेस व्हाइट एनी हाउ ता हस्बैंड को परसुएड करि पारिथिले जे से तांको सन को बैक करिया पाई विश करिया पाई. जस्ट आफ्टर दैट ए विश करिया मात्र के दे हर्ड ए नॉक. हठात पूरा
ठक ठक शब्द शुणिले मिसेस व्हाइट आस्क्ड व्हाट इट वाज तो मिसेस व्हाइट जो नॉकिंग साउंडटा शुणला पर पचारे अरे एटा की शब्द हर हजबैंड सेड इट वाज जस्ट ए माउस ऑन द वॉल तो हजबैंड कहले नहीं से किछि नुहे एटा वॉल ऊपर गोटे माउस चढ़ुची ओके देन देयर वाज अनदर नॉक लाउडर देन द फर्स्ट वन एवं तापरे आउ गोटे प्रथम जो नॉकटा हेतिला से लॉक ठारो आउ टिके जोर गोटे लाउड साउंड हैला देन द फर्स्ट वन टू दिस मिसेस व्हाइट सेड दैट इट वाज देयर सन हबर्ट तो ए साउंड को सुनला परे मिसेस व्हाइट कहला ये मो पुआ आसी गलानी तो इट वाज देयर सन माने हबर्ट सी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द स्टेयर्स तेणु सी स्टेयर आड़ को दौड़िया लगिले बट मिस्टर व्हाइट ग्राब्ड हर आर्म्स टू स्टॉप हर किंतु मिस्टर व्हाइट जेहेतु जानिथिले कन्सिक्वेंस जानिथिले तेणु से तांका आर्म को धरले तांको बाहु को धरिले तांको आगु को जिबाकु देले नाही तांको रोकिया पई सी इंसिस्टेड ऑन ओपनिंग द डोर किंतु मिसेस व्हाइट जिद्दी करुतले डोर खोलिया पे कारण नॉकिंग बॉडी चलतिला बट मिस्टर व्हाइट आस्क्ड हर नॉट टू ओपन द डोर एंड लेट इट इन when the noise of the knocking grew stronger जेहेतु knocking रो noise टा पूरा stronger ही चलतिला माने अधिक रु अधिक knocking ही चलतिला तो मिसेस व्हाइट माने ताकर प्रबल इच्छा थिला जे जाई डोर खोली कि ताको पुओ को रिसीव करिया पाई बट मिस्टर व्हाइट आस्क्ड हर नॉट टू ओपन द डोर एंड लेट इट इन तो घर खोली कि से जो लेट इट इन ताको भीतर को आसी न दवा पई चाहुतले मिसेस व्हाइट रैन टुवर्ड्स द डोर फोर्सिंग हरसेल्फ फ्री फ्रॉम मिस्टर व्हाइट कि शेष में मिसेस व्हाइट निज को फोर्स करके मिस्टर व्हाइट को फ्री कर देला परे हला दौड़िले डोर आगु बट स्ट्रगल टू ओपन इट जिते चेष्टा करथिले भी निज को फ्री करिया पई किंतु स्ट्रगल कि ओपन करि पाउ नथिले मीनवाइल ही फेल टू हिज नीज तो सेही समय टर्न आउट समय रे मिसेस व्हाइट निज को फ्री करबा समय रे का टू मिस्टर व्हाइट थारु सेही समय रे मिस्टर व्हाइट तले पड़ी गले तो आंठे पड़े हेल्ड द पॉप इन हिज राइट हैंड एवं से जगह मंकी स्पॉटा थिला एवं से मंकी स्पॉटा को से राइट हैंड रे धरिले एंड अटर्ड हिज फाइनल विश एवं ताकर फाइनल विशटा बा थर्ड विशटा कहले बट हिज वर्ड्स कुड नॉट बी हर्ड किंतु ताकर थर्ड विशटा कोन थिला एटा कि शुभु नथिला काहे कि ना बिकॉज ऑफ द लाउड नॉकिंग नॉइज जोरे नॉइज होतला तो जोरे नॉइज जुगु ताकर थर्ड विशटा तो शुभु नथिला मीनवाइल ही फेल टू It could only be imagined that he would have wished that his son should be sent back from where it had come, since he feared the consequence of seeing his son. तामाने एटी केवल एतिकी इमेजिन करी हबो जे तांग थर्ड विशटा मे बी एटा थिला जे he would have wished that his son should be sent back from where it had come. तो मे बी एटा ही पारि थाए जे हबर तू जोडी आस्तलु सेडू पळा since he feared the consequence of seeing his son. तो हमें तो बुझी गले थर्ड विश कोन एबे बुझिबा हाउ डज द राइटर मेंटेन सस्पेंस इन द स्टोरी तो हमें ऑलरेडी मु आगुरु कहि सरिछि आवर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय गॉड वी हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज फॉर अस एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू इंटरफियर विथ फेट इज क्रॉस्ड बाय फेट मर्सिलेसली तो आम डेस्टिनी ऑलरेडी सेप हो जाइए तो आम लाइफ को आम जमी आम लाइफ सेमती आम एक्सेप्ट करवा ही दरकार एवं जदि कहीं गोटे माने इविल वे रे थ्रू तंत्र एंड मंत्र या एनी अदर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस रे जदि आम भाग्य को चेंज करने चाहिए ताले से फेट आम चाहूबा विशटा को तो फुलफिल करदेव हेले मर्सिलेसली आमको पनिशमेंट दब द राइटर इज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस टिल द वेरी एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दिस पॉइंट तो ये पॉइंट को प्रूव करने राइटर पूरा लास्ट पर्यंत हॉरर सस्पेंस मेंटेन कर जोटा कि प्रूव हो थर्ड विश रे कारण थर्ड विशटा कन्फर्म नुहे थर्ड विशटा को आमको इमेजिन करिया पड़ुछि थर्ड विशटा कोन आमे एथि पई स्ट्रांगली इमेजिन करूचे ने जेहेतु आफ्टर द थर्ड विश तो नॉकिंग टा स्टॉप हो जाइथिला जेहेतु मिस्टर व्हाइट कन्सिक्वेंस को फियर करथले तो इट माइट बी थर्ड विशटा से हेई पारे जे बट यू मे गो बैक तो वेयर यू हैव कम फ्रॉम You get my point? So, the writer is successful in maintaining a sense of horror and suspense till the very end in order to prove his point by never revealing the truth of the final visitors at the door. तमने से final visitor किए थिला? Who was that? जे कि एते जो knocking करूथला and by not disclosing the third wish of Mr. White. एवं से writer तांकर suspense टाको maintain करछिन दुईटी वे रे जे प्रथम ढाला फाइनल विजिटर जे तांकु माने से तांकर को रिवील करना से किए एवं तांकर थर्ड विशटा कोन ताकु ही मध्य डिस्क्लोज करके रखिचंती सो द राइटर इज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस टिल द वेरी एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन तो पुनी देखा हबो आ गोटे टॉपिक सहित किछि इंफॉर्मेशन सहित किछि न्यू कंटेंट सहित जय जगन्नाथ।